तो ओके, सो आज का ना इज अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर मी. सो लेट्स गो ऑन विद दिस. अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो पेपर एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स जस्ट गो इनटू पेपर पपेट्स. सबने बनाए हुए होंगे. इनफैक्ट इस सेशन के लिए मैं जब कर रही थी, मेरे लगे स्लाइड्स बना रही थी, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं एक बनाऊं पपेट समथिंग लाइक दिस जस्ट टू स्टार्ट द सेशन ऑफ. लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला. बट आई नो कि कितना फन होता है ये इस तरह की चीजें करना, और हम सब ने बचपन में डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह की चीज बनाई होगी. लाइक आई थिंक दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज. सो इट्स डेफिनेटली अ यूनिवर्सल एक्टिविटी. सो हम थोड़ी सी, अब ये जो चीज थी ये तो ऑब्वियसली इट्स समथिंग जो कि आप खेल में मतलब एज अ टॉय यूज करते हो. बट वी गोइंग टू गो इनटू जो फिल्म में एनिमेशन, जो मूवीज बनती हैं या उस तरह की जो है ना, दैट साइड ऑफ एनिमेटिंग विद पेपर. सो उसकी थोड़ी सी हम ओरिजिन में जाते हैं. अब पेपर पपेट्री खासतौर पर इस तरह के पता डॉल्स वगैरह हैं, दे हैव एग्जिस्टेड सिंस पेपर हैज एग्जिस्टेड, सो लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. और क्या कहते हैं, ये पेपर कट आउट डॉल्स तो मुझे खुद भी याद है. अम्मा, दे यूज्ड टू बी दीज मैगजीन्स जो आपके पास भी होती थी, जिनमें इस तरह के कट आउट्स बने हुए होते थे. और क्या कहते हैं, मैं उनके साथ खेला करती थी. एंड जिस तरह ये इस पिक्चर में भी बना हुआ है, दिस वन इज लाइक फ्रॉम 1810 एज यू कैन सी हियर. तो these things have basically been in fashion forever almost. और इसी से फिर बेसिकली जो खिलौने मतलब इनसे खेलने का वो शुरू हुआ. और फिर when cameras came और मूवीज बनना शुरू हुई at the end of the 19th century, that is when ये वाली चीजें भी काफी एक्सप्लोर की गई. Since paper is such a cheap क्या कहते हैं मटेरियल, तो वो obviously it was one of the first media that was used in animation या in film. So जो सबसे पहले हम एनिमेशन की जब बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल एनिमेशन होती है, that began from ये 1926. और ये this lady as you can see, इसका नाम है लॉटी राइनिगर. ये एक जर्मन खातून थी. एंड शी बेसिकली वॉज फिल्म मेकर एंड अ डायरेक्टर. और उन्होंने पेपर से, पेपर कटआउट से जो शैडो पपेट्स हम लोगों ने देखे हुए हैं, उन उस तरह के उस स्टाइल में शी मेड एन एंटायर फिल्म. और दिस एज, ये जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ, दिस क्लिप, ये तो खैर ट्रेलर है. बट दिस मूवी द एडवेंचर्स ऑफ प्रिंस अहमद, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं ये लोग, ये जो है वो इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एनिमेटेड फिल्म. और दिस इज लाइक 1.5 hours लॉन्ग. तो ये मतलब एक तो वही लॉन्गेस्ट एनिमेटेड फिल्म बैक एट दैट टाइम, और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एनिमेटेड फिल्म. इट्स क्वाइट अ स्पेशल थिंग. सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इट्स लाइक. इसकी बड़ा एक चार्म है, बड़े मजे का. And all of this is animated from paper, like paper cutouts, पेपर को काट के ब्लैक पेपर कलर बैकग्राउंड में पेस्ट रख के स्टॉप मोशन में ये सारी वीडियो यू कैन सी एक एक डिटेल जो पेपर से कटी हुई डिटेल है. जो पत्ते हैं, जो जालियां बनी हुई हैं, सब कुछ लाइक एवरीथिंग सो डिटेल एंड सो ब्यूटीफुल. तो मुझे बहुत मजा आया था ये देख के. एक एक जो है वो ये सारा हाथ से कटा हुआ है. कुछ ये है हाथ से कटे हुए सारे कटआउट्स हैं जो ये पपेट्स में करते हैं. एक एक फ्रेम काट के उसको किया है, स्टॉप मोशन में किया है. तो So this was basically the very first Joseph Peters क्या कहते हैं and longest surviving animated feature film. I hope you guys enjoyed it. क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. And if you think about it, this is 100 years old almost. और इसमें जो खूबसूरती है वो अभी तक
इट्स वेरी टेंजिबल एंड उसमें अभी भी जो वो इमोशंस हैं वो अभी भी क्या कहते हैं, यू कैन फील देम, दे वेरी अपेरेंट. सो मूविंग ऑन थोड़ा सा, 1926 में ये पहली जो है वो मूवी बनी. फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल एक्सप्लोर्ड अ लॉट विद पेपर कटआउट्स. एंड देन देयर वाज दिस एनिमेशन बूम जो कि 1950s और 1970s के बीच में अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेरिमेंटेड विद दिस मीडियम. और बहुत सारे जो मतलब टीवी पे इश्तेहार और कार्टून एंड टीवी शोज एंड मूवीज एंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी जो है ना वो फिर पेपर से उन्होंने बनाने शुरू की. So these are some examples, some very famous examples, जिनमें एक, if anybody knows about it, so Monty Python was a very very popular British group जो कि 1970s onward था. एंड ये इन लोगों का जो टीवी शो था उसमें जितनी भी इस तरह की थी कार्ड्स थे, जो कार्ड जिनको कहते हैं क्रेडिट कार्ड, और ये सारी चीजें, ये सारी जो एनिमेशंस थी दीज वर ऑल क्या कहते हैं एनिमेटेड बाय पेपर. इसी तरह से ये दिस इज फ्रॉम अ कार्टून, इसको मूमिन था इसका नाम. आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ यू नोज अबाउट इट. तो मूमिन एक कार्टून होता था, 1970s में ये रिलीज हुआ था. दिस इज ऑल एज यू कैन सी, वेरी क्यूट. और सारा जो है ये पेपर कटआउट से बना हुआ है. और ये जो है वो ये 1955 में कोका कोला का एड रिलीज हुआ था. ये भी सारा पेपर मतलब स्मैश मिशमैश्ड विद लाइव एक्शन एंड पेपर कटआउट्स. और इसका बड़े मजे का वो कॉम्बो बनता है. फिर ये एक मूवी है द मैन विद द गोल्डन आर्म, फ्रैंक सिनाट्रा की. इसका जो ये सारा ओपनिंग सीक्वेंस है वो भी पेपर कटआउट से बना हुआ है. ये जो सारे व्हाइट पेपर्स आ रहे हैं, द आर्म एंड एवरीथिंग, दिस इज ऑल मेड बाय पेपर. और इसी तरह से फिर और भी आगे जाते हैं 1990s में साउथ पार्क जो है वो भी इसी तरह से. यू कैन सी, तो यू कैन क्लियरली ये पीछे बैकग्राउंड में जो ये कैरेक्टर्स हैं यू कैन टेल कि अच्छा ये जो है वो पेपर के बने हुए हैं. तो इसका जो सारा एनिमेशन स्टाइल है दैट वाज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड अपॉन पेपर कटआउट्स. अच्छा. सो नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑल्दो 3D एनिमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड को डोमिनेट करती है, एनिमेशन वाली फील्ड को. बट आर्टिस्ट हैव केप्ट दिस आर्ट जो ट्रेडिशनल एनिमेशन की है, जिसमें स्टॉप मोशन आती है, जिसमें क्ले एनिमेशन आती है, जिसमें पेपर एनिमेशन आती है, ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन है. पीपल हैव बीन ट्राइंग टू कीप इट अलाइव. और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेपर एनिमेटर जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगा था. तो it was this. एक एक है ये सारा पेपर से मतलब वो सिर्फ हाथ से जो पैनल्स डिफरेंट जो ओवरलैपिंग पैनल्स हैं उनको मूव कर रहे हैं. और उससे इतनी एक मजे की जो है वो लाइफ लाइफ फील आ रही है इन कैरेक्टर्स की. तो मुझे बड़ा मजा आया था ये देख के. अच्छा. सो लेट्स जस्ट अच्छा. सो so now I want to share the reason why this session was special for me. So ये जो है ना, this artist इसका नाम है Julian Curie and he goes by the name Righteous Robot. इसकी जो है वो लास्ट ईयर एक एनिमेटेड मूवी, पेपर एनिमेटेड जो शॉर्ट फिल्म इसने रिलीज की थी. एंड इट वाज समथिंग जो मेरा बहुत दिल था कि मैं देखूं बैठ के, क्योंकि मैं काफ़ी इसको फॉलो कर रही थी फॉर लाइक व्हेन दैट वाज रिलीज. सो उसके कुछ महीने पहले से मैं इसको काफ़ी फॉलो कर रही थी एंड हिज वर्क इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. इसकी मतलब ये जो इसके कंधे पे बैठा हुआ है, दिस इज मेड आउट ऑफ पेपर बाय द वे, ऑल ऑफ इट. सो इस तरह की जो है वो मतलब अमेजिंग चीज़ें बनाता है. और इसने बहुत सारे क्लिप्स भी जो अपनी मूवी के थे उसके मतलब डाले हुए थे मेकिंग के. एंड आई रियली वांटेड टू वॉच इट. तो फिर मैंने सोचा कि चलो आई शेयर इट विद यू गाइस. सो लेट्स वॉच दैट फिल्म टुगेदर. इसका ये मैं आपको ट्रेलर दिखाती हूँ एंड आई जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ अमेजिंग इट इज.
Let me tell you a story. Once upon a time, there was a super spy. To be at the end of an almost 3-year journey is bittersweet, to say the least, but to finally share the results of the work is the greatest feeling. So I hope you can join me on Friday, March 1st at 5 p.m. Pacific on YouTube for the premiere of Gruff. So this announcement has this movie took this guy 3 years, almost 3 years to make, and it is really a love letter to traditional animation, honestly. So I would love to share it with you guys, and I hope you guys enjoy it as well. Maybe very for देखना. Rugged, unyielding, and impenetrable. These are the good people of Olden Town, hewn from the harshness of an unforgiving land and less forgiving times. They are Gruff. Previously on Gruff. Trapped in the clutches of the bandit pistolero, darling Bonita awaits rescue, while the people of Olden Town plead with their fearless protector for hope. All this quiet and brooding ain't bringing our Bonita back. We need a plan. Now, don't you worry, little miss. Elmore's more the strong, silent type. Lets the guns do the talking. But in their moment of need, El Mayor did the unthinkable, the unpredictable, the absolutely unexpected, and addressed the people of Olden Town. I will Good meet morning! but I must... This is for you. Pretty, that is lousy town. That ought to wake him up. Oh, my uncle found a way to rescue me. I can tell from a shriveled man by the sling of his slang. And El Mayor ain't got any slang. Bo, breakfast. Mommy, why won't Abuela play with me? Let me tell you a story. Once upon a time, there was a super spy who wasn't scared of anything, but hated quiet. So she found ways to fill it. But her favorite sound was applause. And the one she needed it from the most And impenetrable. These are the good was her papa. hewn from the harshness of an unforgiving land and less forgiving times. That's as close as it got. They are Gruff. So the super spy lived louder and louder. Just so her favorite person would say a little more than... But he didn't. So they talked less. And less. Till one day, all that quiet, it caught up to them. If we can take a look at the touchdown, will away. This is people of Olden Town stand behind their protector, waiting for his word. I think you ain't got my gold. So what'll it be, by your pistola fight or the old silent treatment? I vow to lay down my arms forever for the return of this innocent. I ain't got the words. A great mayor without pistolas? So tell me what's the mess? It ain't money. I have a will. If
familia, and they are strong in ways I am not. After that, the quiet didn't seem so quiet. In fact, it never seemed fuller. Some people don't say the things we want. And some people don't say much at all. But when you run from the quiet, you might miss what they've been saying all along. What was the dad saying to the super spy? Some things don't have words, so we have to be close enough to feel them. Think again, senorita. I can tell the measure of a man by the sling of his slang. And El Mayor ain't got any slang to sling. Mama says the measure of a man's in his doing, not his saying. Anybody says sayings don't matter. Ain't got nothing to matter worth saying. Now hush. And we'll be wiped from the map in a month. I have mi pueblo, mi familia, and they are strong in ways I am not. In ways you have yet to witness. That'll do it. I don't know what I'd do without El Mayor. Neither do I, Bonita. We're lucky he looks out for us. And I always will. So ये मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ और इट्स ब्यूटीफुल, है ना बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी तो बहुत जो प्यारी है, ह्यूमरस भी है और हार्ट टचिंग भी है बहुत। The art form itself, मतलब it's amazing just to see कि amazing. इसने सारा पेपर से किया हुआ है, that in itself is amazing. तो मतलब इसकी जो स्टोरी थी वो यही कि जो ये क्रिएटर है जूलियन, उसके मतलब हिज फादर पास हुए तो उन उसकी ग्रीफ में इसने ये मूवी बनाई है, बेसिकली जस्ट प्रोसेसिंग दैट लॉस और यू कैन फील दोज इमोशंस इसमें। तो बहुत प्यारी मूवी है और हाँ देख सकते हैं, ये इसने सारी खुद बनाई है, मतलब ये और इसकी बीवी थी बस जिन्होंने मिलकर तो सारा पेपर से मतलब ये हजारों के हिसाब से पपेट्स बनाए होंगे और क्या कहते हैं प्रॉप सारे एक एक डिटेल लाइक आप लोगों ने नोट किया होगा वो जो उसका मियाँ बना हुआ है उसका यूनिफॉर्म पे सारे जो मेडल्स हैं, तस्वीरें दीवारों पे, अखबार, मतलब ये जो है जीलियन इसके इंस्टाग्राम पे उसने शेयर किया हुआ है अखबार की एक एक आर्टिकल की उसने प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब इतनी डिटेल और इतना मतलब उसने दिल से बनाया है ये सारा यू कैन टेल बट या आप कह रहे हो ना कि इस वीडियो के बनाने में 3 साल लगे हैं? हाँ जी ये वो सब नजर आ रहा है। इससे मुझे याद आ रही है वो मूवी है ना, विजर्ड ऑफ ऑज, पुरानी वाली, हाँ जी जूडी गार्लैंड उसमें है।
तो इस वीडियो को देखने से मुझे समझ आ रही है कि वो थिएटर है ना, वो सारी स्टेज पे फिल्माई गई है, द विजर्ड ऑफ ऑज। आई थिंक उसमें भी अ लॉट ऑफ पेपर वर्क है शायद। वो इट्स जो पॉसिबल, मतलब थिएटर जो ज़ाहिर है लाइव थिएटर, उसमें तो होते ही सारे हैंड में प्रैक्टिकल प्रॉप्स हैं, तो वो डेफिनेटली। सो मतलब मुझे पर्सनली इस तरह की एनिमेशन जो होती है, इसकी अपनी एक फील होती है और एक अपना चार्म होता है विच इज टाइमलेस। मतलब 3D एनिमेशन अपनी जगह है, बट दिस फॉर मी इज टाइमलेस। वेरी ब्यूटीफुल। तो किसी और का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस। टाइम हो गया पूरा। ये किसी ने कोई ये बहुत बहुत मजे की थी। क्वेश्चन तो नहीं है, बट इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। आई एम स्टिल ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड कि ये किस तरह इन्होंने पॉसिबल किया, वायर्स भी नहीं नजर आ रही और इतनी डिटेल। नहीं, डिटेल और स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी थी, बट द डिटेल वाज अमेजिंग। तो तो इसने कुछ चीजें ना, जिसमें जो मुंह है वो इसने पूरा दिखाया हुआ है, मुंह के ना उसने सारे इंडिविजुअल मतलब डिफरेंट वो मुंह की शेप्स बना के ना डिफरेंट उनके साथ साउंड्स के साथ, और फिर उसने डिजिटली सिर्फ जो मुंह है जस्ट माउथ डिजिटली उसने वो किया हुआ है डायलॉग के साथ क्वार्टर उसको किया हुआ है। लेकिन बाकी सारी चीजें मतलब वो है प्रैक्टिकल है, ऑल प्रैक्टिकल इफेक्ट, जस्ट टाइनी लिटिल बिट ऑफ फोटोशॉप। तो लेकिन हाँ, बहुत मतलब इसके जितने भी मतलब रिव्यूज देखे मैंने, वही मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे ही, सो एवरीवन जस्ट एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो मच। पेपर से बनी है जी ये मूवी, एनिमेटेड। हाँ जी। ये ग्राफ जी, कौन सी मूवी? बंद करो। रैम बंद करो ना, 1 मिनट। आई थिंक वो अपने शी इज टॉकिंग टू हर। अच्छा, तो हाँ, सो आई चैट और में। कमेंट्स पे भी जो है वो चैट में भी आप प्लीज जो है वो देख लो। हाँ हाँ, तो ये सलमान कह रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली exactly, मतलब मुझे भी यही लगता है कि मॉडर्न जो 3D मूवीज होती हैं उनमें मतलब पेसिंग जो है ना वो आजकल, मैं हामिद को भी कहती रहती हूँ कि यार आजकल दुनिया बहुत तेज चल रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता। आई नीड थिंग्स टू बी स्लो एंड यस, मतलब ये आई मीन इसी में देख के ये वाला फॉर इंस्टेंस जो मूवमेंट वाला है क्लिप, मेरा तो दिल कर रहा है ये मैं देखूँ, क्योंकि इसकी हुई पेसिंग बड़ी स्लो सी लेजरली सी, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि ये देखूँ मैं। इस तरह के जो ओल्ड एनिमेशन हैं, ओल्ड मूवीज वगैरह सब में बड़ी एक लेजरली सी पेस होती है, लेट्स यू रियली गेट इनटू दैट। वरना वो धड़ 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 ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो मतलब इट्स फाइन समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि थोड़ा सा स्लो पेस होना चाहिए, and I think people are slowly kind of getting back into that, and that's something though I'm really hopeful it does become more of a trend. So yeah, um, thank you everyone for joining this session. थैंक यू। थैंक यू टू फॉर अ वेरी नाइस क्लास। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। Okay.